घोड़े वाले, जो घोड़े पे पुलिस होती है वो भी थी, तमंचा वाले जो लड़ाई हो जाती है तमंचा लगाते, बैत की छतरी सी लगाओ रखते पीछे, लेडीज पुलिस, सीआरपी भी थी। इतना अमरूद लग रहा था जंगल के अंदर उस टाइम पे, फसल खड़ी थी, लोग मारे, अमरूद भर ले लेडीज पुलिस ने। ऐसा तो यूँ कहता है मेरे पे पढ़ना नहीं आता है, वो हाई कोर्ट का स्टे का वो दिखाना है, ये बोले हमारे पास स्टे है, मेरा कमरा कैसे तोड़ दिया आपने बिजली का, तो वो बोला मेरे पे तो पढ़ना ही नहीं आता है, ऐसा क्यों कहता है। ये ऐतिहासिक स्थान देगा, अभी अक्षरधाम को नामो निशान नहीं है। ये भी जुडिशरी के स्टैंड है, ये बगीचा है, आश्रम ये उधर थोड़ा बना हुआ है, इधर भी थोड़े बने हुए हैं। जैसे फिर ये सामने रोड से सीधे रास्ता गया है, ये रास्ता है जाने का हम लोगों का। ये जो सामने बगीचा है नजर आ रहा है, ये जो पेड़ के समूह हैं सारे, और वहाँ अंदर जाते ही रहने का बना हुआ था, और जो पीपल का पेड़ देख रहे हो वहीं उसके नीचे यज्ञशाला का था रूप। जिस खेत का मैंने चौकीदार रखा और वही चौकीदार उस खेत को खा रहा है, काहे की चौकीदारी रहेगी। जिसको देश का कर्णधार करके भेजते हो वही देश को बिल बना रहा है, खोज रहा है, एक दिन धंसेगा देश। सबसे बड़ी बात सरकार की। दूसरे नंबर पत्रकारों की, अगर वो हमारी बात को उछाल देते तो उस समय बड़ा फायदा होता, बड़ी पकड़ मिलती है। पत्रकारों ने ऐसा कोई नहीं आया, झांका तक नहीं, पता नहीं किसका दबाव था। मीडिया तो ये तो सरकार के ही हैं, सब पक्ष के लोग, ये तो जनता में खाली गुमराह कर रखे हैं। जब जनता की आवाज को आगे लेते हैं, इतना दिन रात प्रयास किए, भागे, फोन किए, इतना कुछ किए, जा के व्यक्तिगत संपर्क है सबसे, कोई भी मीडिया नहीं आज तक नहीं, दैनिक जागरण जो भी है पंजाब, कोई भी नहीं आकर के राजी, कोई भी जवारे हिला करके राजी नहीं। In the name of development, they suffered. Someone always does. But 10 years from now, they will not be the only ones. One section of the temple is already open for public. As far as the plan goes, it will be inaugurated in March 2005. Demolishing the structure now will create a political storm. The real issues will be neglected again. परमिशन तो अभी भी नहीं है, ये तो इनलीगल तरीके से काम हो रहा है, कोई परमिशन नहीं है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं निकाला इन्होंने। अगर कोई भी गवर्नमेंट या किसी चीज को अलॉटमेंट करती है किसी को, पब्लिक नोटिस निकालती है, उस पे लैंड यूज चेंज करती है, उसको पार्लियामेंट में पास होता है, वो कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इनलीगल है, अभी भी इनलीगल से। आज धर्म एक व्यापार बन गया है। धर्म के नाम पर मंदिर खरीदना, नीचे मार्केट बना देना, किराए की आमदनी। धर्म के नाम पर मंदिर मिल जाना, क्यों, उस पर टैक्स नहीं है, उसको जमीन सस्ती मिलेगी, और मंदिर का नाम धर दिया एक बुर्जी बना करके, और बाकी चारों तरफ मार्केट बना दी, तो उससे आमदनी होगी। तो ये तरीका धर्म की वोट में कमाई का तरीका है, वो नियम धर्म पे आधार नहीं है, व्यापार पर आधार पहुंच गई, लाइन बदल गई। Akshardham Mandir, somebody is benefiting by building that mandir, obviously. Supposing it's a 500 crore mandir. Any contractor who builds a mandir will take at least a 20% profit margin. And why the hell should he build a mandir? 20% of 500 crores is how much? Swami Narayan dreamt of building Akshardham on the banks of river Yamuna. His dream was fulfilled along with that of many others who had been eyeing this land. What's so precious about this land? Why this land? The soil is very fine, and it's very fine silky sand, sandy soil with a very high water table. And they'll automatically eye the river because it has this huge amount of land, 97,000 hectares of land, and out of which 2,500 hectares belong to DDA. This is 9,700 hectares of land. It's not a small plot of land.
all this land belongs to DDA. They claim, but actually it does not. It belongs to the UP Irrigation Department. But they have planned for it. They planned for it. It's not a plan that is approved. It's not a legal plan, but they are proceeding ahead with it. And they are proceeding ahead with it essentially because they say this 9,700 hectares of land we will develop because it will give us money. And the money is roughly calculated at 30,000 rupees per square foot, per square yard. So 1 hectare has over 12,000 square yards of land. So 12,000 into 9,700 into 30,000. That is the amount of money that is going to come from this. So it's the worth of the land that is driving development. DDA has a plan for the river flood plain. But what is the planning based on? This is a map of this zone, which they have not released to the public. But if you look at this, this is the map of the Yamuna. This basically covers from below the Okhla barrage all the way to above the Wazirabad barrage. So this whole territory is covered. And if you look at this whole territory, between the Okhla barrage and the Wazira barrage, they have said we will occupy all this land. So it's no longer white. It's all been shaded. The river is kind of going through it. What does that mean? That means that the river is no longer going to be allowed to spread onto this. Not only between Wazirabad and Okhla, even above Wazirabad and below Okhla, they have got plans for this. सारी कंक्रीट जमीन हो जाएगी और जमीन पानी नहीं पिएगी तो सारा इलाका पक्का हो जाएगा तो पानी कहाँ से जमीन को मिल पाएगा? वाटर लेवल तो बढ़ नहीं रहा. Construction will hinder the recharge to the extent that any construction activity increases the rate of runoff. So the more paved areas, the more hard buildings that you get, there's more runoff and less percolation into the ground. Most construction also implies utilization of water as the basic infrastructure for those constructions and the conversion of that water into sewage. So on the one hand it prevents recharge of groundwater, and on the other hand it pollutes the water that anyway gets recharged. भाई ये अक्षरधाम को बचाने के लिए, पानी का रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए अक्षरधाम बना. वो बांध बना दिया नया बाढ़ को रोकने के लिए. बाढ़ को जो है जमुना नदी के उसको बहाव को ये गला घोट रहे हैं और इसके गले घोटने से जो क्या होगा, जैसे कि सन 77-78 की बाढ़ आई थी, जैसे कि दिल्ली में हाहाकार मच गई कि अच्छी जगह पानी घुस गया, एक मंजिल डूब गई. तो कोई ना कोई बम्बार जब बारिश से ज्यादा होगी पीछे से पानी आएगा, ताजे वाला पानी छोड़ेगा, कोई ना कोई बम्बारमेंट होगा, कहीं ना कहीं ये पुस्ता टूटेगा और पब्लिक को नुकसान होगा. New constructions, new bunds, lots are being planned without following any logic. DDA is in the forefront for the venture. Mr. A.K. Jain is Commissioner Planning, DDA. Maybe he can explain more about it. The main task of Delhi Development Authority is to ensure proper planned development of the city. The idea is that from a national capital it has to become a global city. So what we are doing now is that we are trying to connect the population to the River Yamuna. But River Yamuna is a very eco-sensitive zone. So we are not doing any building in the River Yamuna. We are very careful that the quality of water is improved, the pollution is controlled, sanitary landfill sites are removed from the river bank and those are developed into drains and parks, and we have plans to develop river bank in a big way, but basically in terms of greenery. Over the years, land use has changed. What was once river floodplain will witness structures like Akshardham and Commonwealth Village, all in the name of development.